Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that as a policy, we don't address company or stock specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and we do have a third dedicated line, that's 2342 1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। बात करेंगे कच्चे तेल के दामों की, सोने के भाव की। आज दिन शनिवार का है और आज के दिन हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि आप चाहें तो हमसे कोई भी सवाल इकोनॉमी से, बिजनेस से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 717 106। तीनों नंबर दिल्ली के। इन नंबरों को डायल करने के पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 जरूर लगाएं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं यामिनी अग्रवाल। यामिनी जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ हैं। यामिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। Now let's begin today's edition of Market Mantra with the headlines in English. Well, the top stories. Key domestic indices add 4% in April. Sensex closes above 61,100 mark. Nifty reclaims 18,000 level. And oil prices rise over 2%. घरेलू शेयर बाजारों में अप्रैल में लगभग 4% की तेजी रही। सेंसेक्स 61,000 के पार हुआ तो निफ्टी 18,000 के स्तर से आगे निकला। और अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। And now for all the details. Amid volatile global markets, the Indian indices put up a good show in the week ended yesterday and also added 4% for the month of April, the best in 5 months. Index of top 30 companies at the Bombay Stock Exchange, Sensex, closed above 61,100 points level, while the Nifty, which is an index of top 50 companies at the National Stock Exchange, closed above 18,000 level. During this week, BSE Sensex added 1,457 points or 2.45% to close at 61,112, while Nifty 50 gained 441 points or 2.5% to finish at 18,065. For the week, the BSE mid cap and small cap both rose 2.5% each. और इस पे क्या रहा मार्केट और कैसा रहेगा परसों से, सोमवार से खुलने वाला मार्केट, इस पे बात करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 2 मेहमान हैं, योगेश शर्मा और अतनु साहा कोलकाता से। पहले चलते हैं अतनु के पास। अतनु, अपना सवाल पूछ लें प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। Good evening. Sir, my question is what and why the dollarization? And why China set back from its manufacturing area? Thank you. When we talk about dollarization, it's primarily a process where internationally dollar was accepted as a currency and a medium of exchange because many countries did not find it easy to exchange or bring about trade through their currencies. So at that point of time, it was felt that if they kept reserves of dollar and then they traded, it would be easier for them. As far as China is concerned, it has been able to manage its economic manufacturing base in such a manner that it has now become a part and parcel of the global supply chains.
and it has fostered in its policies that are backed by the government in ensuring that they manufacture most of the items that are required globally and become one of the major trade players or partners in the world economy. Well, let's move on and take our next caller. We have Yogesh Sharma joining us from Delhi. Good evening, Yogesh, and welcome to Market Mantra. पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इतने बढ़िया प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद। सवाल शरद जी से ये है कि मैं ईपीएफ की वेबसाइट को बहुत टाइम से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पासबुक डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो एक हफ्ते से सपोर्ट नहीं कर रही है। क्या कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कंप्लेंट रेज कर सकते हैं? दूसरा, क्यों ऐसा होता है? हमारी कंट्री इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है ऑलरेडी, कोई स्टार्टअप आती है, उसकी ऐप इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट की क्यों इतनी ज्यादा लैग करती है? योगेश जी, पहले मैं आपको बता दूं, आपका सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो यामिनी अग्रवाल हैं, जानी मानी मार्केट एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ हैं। आज आपके सवालों का जवाब वो देंगी। और जहां तक आपका पहला सवाल है, अगर आपको सपोर्ट कोई नहीं मिल रहा है तो ये आईटी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है यामिनी? हाँ जी, जहां तक वेबसाइट्स जो होती हैं, अगर वो ट्रैफिक सपोर्ट नहीं कर पाती या कोई टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टी आती है, तब आपको देखेंगे कि आप अपना कोई भी चीज डाउनलोड नहीं कर पाते। पर अगर आप कुछ समय बाद कोशिश करें तो आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और जो आपको जानकारी चाहिए वो भी पाएंगे। वहीं पे अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो ऑनलाइन ग्रीवियंसेस भी होंगे, जहां पे आप ग्रीवियंसेस डाल सकते हैं या आप आवेदन डाल सकते हैं कि हमें ये मुश्किलें आ रही हैं, हम इसके लिए कहाँ जाएं। वरना आप उनके ऑफिसेस भी जा सकते हैं और अपनी पासबुक कंप्लीट करा सकते हैं। जहां पे आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट सेटअप में एक बहुत लार्ज सेटअप होता है और बहुत सारे लोगों को एक साथ कैटर करता है। अगर आप इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस का हो, पासपोर्ट का हो, आपकी आईटीआर रिटर्न्स का हो या किसी भी और सुविधा की बात करें, क्योंकि वो एट लार्ज पब्लिक को डील करते हैं तो उस पर ट्रैफिक्स काफी रहते हैं और जिसकी वजह से कई जगहों पे तकनीकी दिक्कतें आती हैं। पर अगर आप देखें जिस तरीके से वो सर्विस करते हैं और जल्द से जल्द आपको आपका सोल्यूशन देते हैं या एक सेंट्रलाइज सर्विस देते हैं, आप देखेंगे कि उनके माध्यम काफी हद तक अच्छे हैं। Right, let's go down south to Bangalore, from where we have N.R. Prasad joining us on the program. Good evening, Mr. Prasad, and welcome to Market Mantra. Good evening, Rangabasham, and good evening to all. Yes, sir. Yeah, go ahead. Prasad from Bangalore. My question is, this core sector doing very, very badly. It has come down to 3.6%, 5-month low. And my second question is, if this is the really time to invest in, then is it worth investing out of the 8 core sectors, cement, coal, fertilizers, and one more is from the electricity. Can we invest in those? Yes, Yamini, what would you say? Well, when we talk about the core sector slowdown, well, we would see that globally there has been a slowdown and that has also affected the economy. When you see the overall growth in the economy, it is still very positive vis-a-vis the world markets, and India continues to remain one of the fastest growing economies. Few factors which have led to the slowdown is, one, the interest rates have gone up and there has been tightening in the monetary policy. Also, the Ukraine war is one of the reasons. And the third reason that has been is the banking scenario, which is affecting the world markets today. So these are few factors which are affecting. Also, if you look at the post-pandemic levels and the way recoveries and the fiscal stimulus or the monetary support that has been provided in the economy, most sectors are doing well, but it is still not really, it is giving a positive growth, but it is not as good as the others. So that is why you see less effect.
As far as 8 core sectors are concerned, yes, they are good sectors to invest in because primarily there is a lot of growth that is being projected. If you look at most of the detailed studies of IMF, World Bank or the others, we are likely to grow beyond 6% in most of the economies, and there are projections that by 2047 we will become a developed economy. So with those projections in mind, I think it is good to invest in the core sectors. बिल्कुल। और यामिनी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये ऐड यहाँ करना चाहूंगा कि ये 3.6% का जो आप फिगर देख रहे हैं, जिसकी चर्चा आपने की, ये मार्च महीने का फिगर है। और आमतौर पर जब आप कोर सेक्टर की बात करते हैं तो आप ये ईयर ऑन ईयर लेते हैं, न कि सिर्फ पिछले 5 महीने में ये सबसे लोएस्ट है। अगर आप 2022 के मार्च का फिगर देखेंगे तो उससे 3.6% का इंक्रीज पाएंगे, और ये वो फिगर है। और 8 कोर सेक्टर्स का आपको बता दें कि जो IIP नंबर्स होते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें 40% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन होता है। और खास करके कोल को अगर देखें तो 12% से ज्यादा का ग्रोथ दर्ज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही कुछ सेक्टर्स कोर के इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, कोर इंडस्ट्रीज जिसमें गिरावट रही है। बिजली है, उसमें आपका स्टील, सीमेंट है, स्टील बढ़ा है। लेकिन आप कोल को देखेंगे और स्टील को देखेंगे तो उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। और जब इलेक्ट्रिसिटी में जो गिरावट है वो मार्च का महीना होता है, किसी भी साल देखेंगे तो गिरेगा, क्योंकि ये वो महीना होता है जब बिजली का कंजम्पशन काफी कम होता है, ना आपको गीजर चलाने की जरूरत होती है, ना ही आप एसी चलाते हैं। इसलिए ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है वो कम होती है। Right. And let's move on and take our next caller. We have Hasmukh joining us from Mumbai. Good evening and welcome to Market Mantra. Yeah, good evening, Market Mantra. Yeah, go ahead. Put your question. My question: how the Indian market will behave in the next week, especially after the Fed decision? Thank you. हसमुख जी, आपको अपना क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, वो क्लैरिटी के साथ नहीं है। प्लीज रिपीट इट। How the Indian market will behave since they say next week? हम समझ गए। अब आते हैं अपनी पहली स्टोरी पे। यामिनी, जो रंगा ने कहा, अगर इस पूरे महीने को आप देखें, 4% एडिशन हुआ है इंडेक्सेस में, 60,000 के ऊपर चला गया है, सेंसेक्स 18,000 के पार है, निफ्टी। और कल की अगर बात करें, फ्राइडे की, सेंसेक्स 30 पैक्स में से 24 ऐसे थे जिसमें ग्रीन्स में थे, सिर्फ 6 ऐसे थे जो रेड में थे। तो ये तो हुई बात इस महीने की, पिछले हफ्ते की। नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करेगा और ये जो ग्रोथ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, 7 कंसेक्यूटिव सेशंस से कंटिन्यूस गेन्स आए हैं, जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन रखे हुए हैं मार्केट्स के लिए, जिसमें काफी हद तक एट्रीब्यूट किया जा रहा है जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की अर्निंग्स थी उनको। देखा जाए तो कुछ मूवर्स रहे हैं स्टॉक्स जिन्होंने सेंसेक्स को काफी गेन पहुंचाया है और जिनका खासा असर सेंसेक्स की मूवमेंट पे भी रहा है। अगर आप कहें तो मार्केट्स में ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा, पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जहां तक उनका क्वेश्चन था फेड के बारे में, अगर हम देखें तो जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मार्केट्स जो है डाउन आ सकते हैं, क्योंकि जो अब तेजी है वो मंदी की तरफ लेके जा सकती है। Right. Well, listeners, you are tuned in to Market Mantra on All India Radio, and as you know, this is a phone-in program. The weekend program is a phone-in program where you can call up and talk about your queries, your questions and doubts related to the economy and business. For that, just to remind you, our phone numbers are 2331 4444, 23717106, and the third dedicated line is 23421050. And as always, you need to prefix the STD code, that's 011 before the numbers. और यामिनी बात कर रही थी यूएस फेड में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ा तो थोड़ा मार्केट एक करेक्शन, शार्प करेक्शन ले सकता है यामिनी। लेकिन हमें यहाँ पे ये भी एक चीज देखना होगा कि पोस्ट कोविड इंडिया में जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स का बेस है उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है और वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है मार्केट को।
प्लस पीछे महीने में आप देखें, कुछ हफ्तों में देखें तो FIIs का इन्वेस्टमेंट फिर से एक बार बढ़ना शुरू हुआ है। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो US फेड का रेट हाइक है या इंडिया में RBI ने जो रेट हाइक की है, इन सब का जो शॉक है एक तरीके से इन्वेस्टर्स ले चुके हैं एंड दे आर नाउ थिंकिंग बियॉन्ड दैट? जी देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी हद तक स्टॉक मार्केट में रुझान रहा है, स्पेशली कोविड पीरियड के बाद, और उसने काफी बॉयंसी दी है। जो DIIs हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है ओवरऑल मार्केट को। FIIs का रुझान बीच में जो है सेलर्स की तरह हो गया था, पर फिर वापस बायर्स की तरह हुआ है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जबकि काफी सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने जो आंका था एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट, उससे थोड़ा सा उसे कम किया है, पर फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है और यहीं पे ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस है। अगर हम कहें कि रिटेल इन्वेस्टर्स या कोई और इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट्स में कितना भरोसा रखते हैं, वो इस बात पे जरूर निर्भर करेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स क्या हैं। जहां तक फेडरल रिजर्व बैंक की स्थिति की बात है, मार्केट हाइक्स काफी ज्यादा हो चुकी हैं और ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर और ज्यादा जाती हैं तो वो मंदी का भाव जो है उसको थोड़ा सा एग्रेवेट करेंगी, खास तौर पे US में भी और बाकी देशों में भी, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स अगर वो लाते हैं इन्फ्लेशन को काबू लाने के लिए तब दिक्कतें आएंगी। इन्फ्लेशन बहुत सारी इकोनॉमीज में स्लो डाउन हुआ है, जैसे अगर आप भारत में भी देखें तो एक स्लो डाउन आया है, पर फिर भी आशंका जताई जा रही है कि सप्लाई चेन बॉटलनेक्स की वजह से या सप्लाईज की वजह से जो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आएगा वो अभी भी नजर आ सकता है, पर उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी फेज में रहेगा। तो मार्केट्स ने ज्यादातर करेक्ट किया है, पर क्योंकि एक हाइक आएगा और स्लो डाउन की आशंका बनेगी तो करेक्शंस आ सकते हैं। Right, let's continue taking phone calls, and joining us next is Sunil Gupta from Delhi. Good evening, Sunil, and welcome to Market Mantra. नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम से एक क्वेश्चन था। मैडम, अभी लास्ट वीक में कुछ गुजरात के PSUs में एकदम तेजी देखी गई, बहुत तेजी से शेयर बढ़े, इसका क्या कारण था और अब इनका क्या ट्रेंड रह सकता है, क्या इसका सकती है इन्वेस्टर्स के लिए? जी देखिए, ओवरऑल ट्रेंड्स अर्निंग्स पे रहता है और इस बात पे भी रहता है कि वो आगे उसमें कितना निवेश कर रहे हैं। बहुत सारे PSUs में अभी निवेश चल रहा है, जिसमें उनके अंदर नए सेटअप्स को लाना या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की जाए या उनकी स्थिति बेहतर करने की बात की जाए, वो चल रहा है। ये भी देखा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनमें एक काफी हद तक चेंज आया है अर्निंग्स के प्रति, तो जिसका असर हमें ओवरऑल मार्केट पे भी नजर आता है, जहां पे उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। बड़े सारे PSU के स्टॉक्स लोग इसलिए भी लेना चाहते हैं क्योंकि वो डिविडेंड बहुत अच्छा दे रहे हैं, जिसका फायदा लोगों तक पहुंचता है। And Yamin, still about the stock markets, if you see, the Sensex from this 62,000 level, it has gone down to 57,000 and all 2 months back when we had the Hindenburg report and its impact on the Indian stock markets. But from there on, especially in the last 10-12 days, there seems to be an emphatic upward move. Would you say that the markets have now kind of taken this report, Hindenburg report, in its stride, and now it has moved on from there on? Well, the markets have been stable, if I would say, though the report had an effect on the FPO and the other things. But since people did believe in the strong regulatory setup that does exist in India and the systems that are accountable and transparent in terms of the regulatory frameworks, and because there are not only one institution but several institutions that are making companies accountable for their work, I think that is what the markets did depend upon while undertaking, the allegations that were put in the report. So that resilience was there in the market. There was certain amount of a confidence which was there in the market, especially for the investors who have seen the market during the COVID period and the post-COVID period and have seen the resilient country
taking care of the COVID period, especially, because we have a very high population density and it was a difficult period. We had vaccination and we had many other effects that were there. So we did see, a lot of people getting benefited out of the COVID vaccination. We did still see our macroeconomic fundamentals remaining more or less stable. And many of the world international agencies continue to keep India's growth story at the fore and saying that it will still be one of the, best expected economy in terms of macroeconomic fundamentals. So that is what did put positive. What does add on to the strengths in the market is the earnings of the financial sector, which have added value to the market today. Right. And let's take our next caller. We have Kavi joining us from Vadodara. Good evening and welcome to Market Mantra. Good evening. Myself Kavi calling from Vadodara. Yeah. Actually, I have a question about the retirement benefits. Suppose if some employee retires and takes benefits like gratuity, commutation, thereafter by some insurance saving element. So, the whatever lump sum the employee receives, what are the tax implications in this regard? Should he need to pay tax for the retirement benefits, whatever he avails? That is the first question, sir. And second question is this, there's something called commutation, sir, that you all might be aware of. Yeah. Suppose if someone avails a commutation and invest the same thing into a mutual fund with the motto of getting some monthly income, so what will be the, you can say, how correct this decision is, in your opinion, please? Okay. Fine. See, the tax benefits would depend upon whether the person is a government employee or a non-government employee. For the government employee, it is not taxable. For the non-government employee, some portion is taxable. So you'll have to look at those particular aspects. As far as investments in mutual funds are concerned, you can do investments in the mutual funds through the SIPs that are there. You can also do lump sum investment, which is also directed towards mutual funds. But it is always advisable to do a diversifiable investment into different options of whatever lump sum amount you get. People usually keep different options like the senior citizen funds that are there in which they invest of the banks. Also, they keep some amounts in post office savings. Some people also keep it in debt mutual funds, then in equity mutual funds, then in balance. So, defined, diversified funds would be easy. Then also there are RBI bonds where people keep money. So it will be best that you choose among the various alternatives and see how it meets your liquidity requirement and your return requirement and safety requirements when you make investments. Yeah. And just to add on, he said that after taking commutation of pension, investing, so it is immaterial. Once the commutation itself is not taxable, after that, whatever, you can do anything with that money. With that money, you can do anything that you want to do. You can. A lot of people buy a house. A lot of people invest in their children's marriages or in other activities that are there. That's right. And let's go across to the American markets. U.S. stock indices advanced yesterday after strong earnings updates from Exxon and Intel offset worries over Amazon's slowdown warning, while economic data reinforced expectations that the Federal Reserve would hike interest rates next week. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both rose 0.8% each. The Nasdaq Composite climbed 0.7%. As we were discussing earlier also, Yamini, it seems, a rate hike in the US is kind of imminent. To connect the same thing back home, the Reserve Bank of India paused in the latest MPC meeting. Do you think moving ahead in the next one or two monetary policy committee meetings, can we see some, say a 25 basis points hike or a 50 basis points hike in times to come? Well, I do see that the RBI is playing very balanced because it has to maintain a growth rate and it has to support growth, whereby investments are needed both by the private sector and the government sector. It's actually a tightrope walk. It's a very tightrope walk, and at the same time it has to take care of the inflation and the interest rate differential that exists between the Federal Reserve Bank and India's rate.
So there are different parameters which it is looking at. So when it says that it did not raise the interest rates this time because it did see inflation slowing down. So that was one of the reasons. But if there is a hike from the Federal Reserve Bank, RBI would have to step in and have to raise the rates because the differentials, then affect the capital flows in the market and also adversely affect the rupee exchange rate, and that affects the imports and the entire balance of payment situation. It also affects the inflation in the economy because of the depreciation of rupee. So these are different parameters which one has to look at when the RBI has to deal. But again, the RBI would, I believe, like to keep an accommodative stance, primarily to support the requisite growth which India is positive about, and the strong fiscal impetus which is being given by the driven policies of reform and other activities which promise a strong sustained growth for India. और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की सकारात्मक भावना पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मुंबई में भारतीय व्यापार मंडल के इंडिया कॉलिंग सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत में आज मुक्त पारदर्शी अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और एक निर्णायक नेतृत्व है। वाणिज्य मंत्री ने सभी से भारत को 2047 तक $47 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखने की अपील की। श्री गोयल ने कहा कि दुनिया के प्रत्येक हिस्से में रहने वाले लोगों को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि कभी कभी ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये भारत के भविष्य को लेकर दुनिया के विश्वास को दर्शाता है। एक बहुत अच्छा फिगर पीयूष गोयल ने दिया है और कहा है कि 2047 बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, जब हम 100 साल के हो जाएंगे आजाद भारत, और 25 साल है और हम पहले से ही अमृत काल में प्रवेश कर ही चुके हैं। अभी हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्दी ही तीसरी पर पहुंचने वाले हैं, और यहां से लेकर $47 ट्रिलियन तक का सफर, ये कोई ऐसा फिगर नहीं है यामिनी जो हम आसानी से नहीं पहुंच सके। अगर आप देखें तो जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से रिफॉर्म्स आ रहे हैं और तरक्की के स्तर छू रहे हैं, उसमें जरूरी बात है कि जो सभी लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं और एक समावेशी योजनाएं आ रही हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें या एनईपी पॉलिसी जो एजुकेशन की बात करें या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का योगदान की बात करें, इन सभी का जो असर है वो सीधा सीधा हमारे जीडीपी ग्रोथ पे पड़ेगा। जो इसमें खास तौर पे अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स की भी बात की गई है, जिसमें हमने इतने यूनिकॉर्न्स देखे हैं जो बने हैं। ये सभी चीजें जो है जोड़ करके एक भारत को बड़ी जगह लेके जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं और हर जगह जहां पे निवेश हो रहा है और लोगों को जो है फायदा पहुंच रहा है उस निवेश से, सिर्फ जो आसपास के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, कंपनीज भी आ रही हैं, वो भी निवेश कर रही हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत अपना एक मान बना पा रहा है, चाहे एक रुपए को एक चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तरह रख करके, वो सभी जो है भारत को एक बेहतर कल की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें ये जो टारगेट है वो अचीवेबल है अगर हम अपने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको फुल्ली यूटिलाइज करें। Well, let's take a look at the energy scenario. Oil prices rose over 2% after energy firms posted positive earnings, and US data showed crude output was declining while fuel demand was growing. So Brent crude ended the week at around $80.33 per barrel, while the West Texas Intermediate, or that's WTI crude, closed at $76.78 per barrel. और ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं, इसके दामों में थोड़ी सी बढ़त हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल हम जो
क्रूड इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्चा तेल वो ज्यादातर रूस से आ रहा है और रूस से आने वाले तेल हमारे लिए सस्ते हैं, इसीलिए हमने देखा कि लगातार बढ़ने के बावजूद हमारे तेल के दाम अभी स्थिर हैं। ऑयल पूल भी बढ़ रहा है और इससे सबसे बड़ा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, वक्त खत्म हो रहा है। यामिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। धन्यवाद। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Key domestic indices add 4% in April. Sensex closes above 61,100 mark, while Nifty reclaims 18,000 level. And oil prices rise over 2%. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.